Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn an important and interesting topic, that is probability. Let's have the introduction first. What does it mean? The probability means it's the state of being probable. The state of being probable, or the extent to which something is likely to happen, or I may say it is a game of chance. It's a game of chance. So first of all, we must know who is the founder or the father of the probability. This Girolamo Cardino, an Italian mathematician, a great mathematician who did a lot of work in algebra, and also known as the father of binomial theorem as well. In the 16th century, he did this work. He was from Italy, and later on few more mathematicians like Pascal and Fermat, they did some extra work in this topic. तो पहले तो जहाँ तक हमारे सिलेबस का ताल्लुक है, क्लास 8th का जो सिलेबस है वहाँ पे जो टॉपिक है डेटा हैंडलिंग जो है, डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, तो उसमें क्या है कि वहाँ पे एक एक्सरसाइज है 5.3, तो उसमें इस प्रोबेबिलिटी का वहाँ पे तज़किरा हुआ है। और साथ ही वहाँ पे जो क्लास 10th का है वहाँ पे भी एक अलग चैप्टर इसके लिए है, 15th चैप्टर ऑफ द मैथ्स। तो इसके बारे में हम पूरी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कहा भी कि इट्स द गेम ऑफ चांस, सो वी आर गोइंग टू प्ले गेम। तो इसमें कौन कौन सी गेम आती है तो आपने यहाँ पे देखना है। पहली गेम जो इसमें आती है वो है स्पिनिंग ऑफ व्हील, स्पिनिंग ऑफ व्हील। तो सेकंड वन जो इसमें आती है टॉसिंग ए कॉइन। थर्ड वन टॉसिंग a die, and the fourth one playing cards। तो इनमें से इस वक्त जो हम जिस पे हम डिस्कस करना चाहें ताकि ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए, तो इन दो टॉपिक्स पे हम इन दो गेम्स के बारे में अभी बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉसिंग ऑफ कॉइन के बारे में बात करें। सपोज वी आर गोइंग टू टॉस ए कॉइन। यहाँ पे मेरे पास एक कॉइन है, इसका हेड्स और ए टेल। तो पहले ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि व्हेन वी आर गोइंग टू टॉस ए कॉइन व्हाट आर द आउटकम्स। तो पहली टर्म जो हमने यहाँ पे समझनी है वो है आउटकम्स। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉस ए सिंगल कॉइन व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स, व्हाट आर द आउटकम्स, टोटल आउटकम्स लिखने हैं यहाँ पे। तो आउटकम ये निकल सकता है जब हम इसको टॉस करें, जब हम इसको टॉस करें तो हेड निकल सकता है, टेल निकल सकता है। तो इसके जो आउटकम्स हैं वो है हेड एंड टेल। व्हेन वी टॉस ए सिंगल कॉइन वंस वी गॉट दीज आउटकम्स, टू आउटकम्स आर देयर, one is heads and second one tail. These are the outcomes of a single coin. Suppose we are going to toss two coins simultaneously. एक बार हम दो coins हमारे पास हैं, ये फर्स्ट वाली है, suppose this is second one, and we are going to toss them simultaneously. If two coins are tossed simultaneously, पहले हमने सिंगल coin को टॉस किया, सिंगल coin tossed once। अब यहाँ पे हम टू coins are tossed simultaneously, एक बार। तो what are the outcomes?
तो या तो ऐसे मुमकिन है कि दोनों का हेड आ सके, या ऐसे भी हो सकता है जो फर्स्ट वन है इसका हेड आए, दूसरे का टेल आ सकता है जब इसको टॉस करें। तो ये भी मुमकिन है, फर्स्ट वाले की मतलब हेड और सेकंड क्वीन का टेल आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि पहली वाली क्वीन का टेल आ सकता है और सेकंड का हेड आ सकता है, टेल और हेड। और इट में बी टेल टेल, दोनों का टेल आ सकता है। ये तो टोटल आउटकम्स हो गए इसके। When we toss two coins simultaneously, as we know, a coin is having two faces, only two faces. When we toss it once, that means it has two faces, two ones, two. Total outcomes are two. When we are going to toss two coins, single coin is having two faces, that means two coins are tossed. The outcomes are four. So we got four. 1, 2, 3, and 4. Similarly, if we toss three coins simultaneously, suppose one more coin here, this is first one, suppose this is second, like this. These are the three coins, we are tossing them simultaneously. एक बार हम करते हैं तो आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? तो थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो व्हाट आर द आउटकम्स? ये भी हो सकता है हेड हेड हेड, तीनों का हेड आ सके, हेड हेड हेड। ऐसे भी हो सकता है कि इन दो का हेड आए और इसका टेल, तो हेड हेड टेल भी हो सकता है। तो थर्ड चांस जो है, पहली वाली का भी हेड आ सकता है, तो बीच वाली हेड हेड टेल, और थर्ड वन हेड टेल हेड, इसका हेड आ सकता है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। या पहली वाली का हेड और जो दो हैं उनका टेल आ सके, टेल एंड टेल, हेड टेल टेल, ये भी आउटकम हो सकता है। टेल हेड हेड, ये भी हो सकता है कि इसका टेल आ जाए और इन दोनों का हेड आ जाए, टेल हेड हेड। और टेल हेड टेल, टेल इसका हेड, इसका टेल, इसका टेल, टेल हेड टेल। या टेल टेल हेड, टेल टेल इसका हेड, टेल टेल हेड। या तीनों का टेल आ सकता है, टेल टेल टेल। मतलब इसके दो फेसेस, इसके दो फेसेस, इसके दो फेसेस, 2 2s 4 2s 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल आर डिफरेंट। इनमें से कोई एक जैसा नहीं है। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल head, tail tail tail. So all different. So all 8 outcomes are here. Similarly, if we toss 4 coins, the outcomes may be 2 2s 4 2s 8 2s 16. So it is clear now. This was all about the outcomes of a coin. तो हम आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। When we toss a single coin, a coin is tossed once, single coin, tossed once. So outcomes are head or tail. These are the outcomes. So what is probability now? It is the chance, probability of head. हेड निकलने के कितने चांसेस हैं? जब हमने सिंगल कोइन को टॉस किया, हेड निकलने के कितने चांसेस हैं? सो इसके तो कितने चांसेस हैं यहाँ पे? एक ही है आउट ऑफ 2 चांसेस। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। चांसेस इतने हैं, 50% है। 0.5 भी कोई लिख सकता है,
ऐसे भी हम लिखें 0.5, वो भी सही है। कोई लिखे 50%, same is the case. Similarly, if we check here probability of tails, what is the chance of getting tail when we toss a coin once? So it is equal to the probability of head as well, same as this. So if we call here, if we check here, what is the probability of getting head tail? हमने क्वीन को टॉस किया पहले, getting head here. Total chances are 2. The probability of getting head is only 1/2. The probability getting tail is only 1/2. So is there any chance that we will get simultaneously head and tail upwards? So this is dead possible. So the probability is 0. Probability is 0. So this is an experiment. We call this an experiment, and these are the events. First event, second event, third event. इनको events भी कहते हैं of an experiment. So these two are possible here. As we checked here, these are the possible. First two are the possible events, and this is impossible event. So possible event, these two are sure भी कह सकते हैं, sure events or possible events. Possible events, these two, this one and this one. So what about this? This is impossible event. So let us check here one thing more. If we check here, probability of head plus probability of tails plus probability of head tails equal to, these two are sure, these two are certain, these two are possible events, and this one is impossible event. As we know, probability of head equal to 1/2, probability of tail 1/2, plus this probability equal to 0. So if we sum these basis and powers added, you will get 2/2, that is 1. इससे क्या पता चला? The sum of all elementary events of an experiment, the sum of all elementary events, these are elementary events of an experiment, इनको हमने sum किया, this is equal to 1, this is equal to, तो एक फॉर्मूला यहाँ पे बनी, probability of sure events, इसके बदले में यहाँ पे लिखता हूँ E. E क्या होता है? E means here sure events, possible events. The probability chances sure events plus probability of not E means impossible event, just like this, equal to 1. सम करके किसके बराबर आया अभी? 1 के बराबर. ऐसे भी लिख सकते हैं, और probability of event sure event plus probability of impossible event, इसके ऊपर बार लगाइए, equal to 1. बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है.